नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनी जैन। आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट द क्यूआरजी हॉस्पिटल फरीदाबाद एंड सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज बात करेंगे सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में। हेड एंड नेक कैंसर अप्रैल का जो महीना है, इट इज नोन एज हेड एंड नेक कैंसर मंथ। मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन हु आर व्यूइंग दिस लेक्चर राइट नाउ और दिस टॉक राइट नाउ कि व्हाई इज इट कॉल कैंसर मंथ। मतलब अप्रैल को ही ऐसा क्या है कि जो हमने हेड एंड नेक कैंसर मंथ को डेजिग्नेट कर दिया है। इज देयर अ फैक्ट टू इट, या इसमें हमें मैक्सिमम कैंसर्स डायग्नोज किए जाते हैं, या खाली अप्रैल में ही हेड एंड नेक कैंसर होता है, बाकी 11 महीने में नहीं होता। सो आई थिंक ऑल द आंसर्स, एवरी आंसर टू ऑल द क्वेश्चन इज नो। अप्रैल इज ए मंथ, उसको से एक डेजिग्नेट कर दिया गया है कि हेड एंड नेक कैंसर मंथ, जिससे कि हाईलाइट हो जाए। कैंसर एक लगातार बढ़ती हुई बीमारी, इट इज इंक्रीजिंग एट एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 के 4, 4 के 16, 16 के 256, 16 के 232 नहीं, 16 के सीधा 256 हो। सो व्हेन द डिजीज इज रैपिडली इंक्रीजिंग, वी नीड टू स्टॉप इट सम। ठीक है, इट इज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एपिडेमिक और अ पैंडेमिक, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। The terminology might not be the correct, but just to give you the depth of the scenario, the depth of the disease, I'm just talking about such heavy words. Head and neck cancer, any cancer जो head या neck में नाम बताता हो, उसको head and neck cancer कहते हैं। कि अंदर के हिस्से में हो, जीभ में हो, गले में हो, या फॉर दैट नेक में नोड्स हो, कुछ भी हो, लिम्फोमा हो, नेक में भी नोड्स होते हैं, व्हिच कैन बी हेड एंड नेक कैंसर पार्ट ऑफ। अब हेड एंड नेक कैंसर के अलग अलग रूपांतर हैं, वी हैव अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड हिस्टोपैथोलॉजीज। बट आई एम नॉट हियर टू टेल यू द ट्रीटमेंट एट ऑल। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि हमें इसमें सर्जरी करानी चाहिए, हमें इसमें रेडियोथेरेपी करानी चाहिए, या हमें इसमें इम्यूनोथेरेपी करानी चाहिए, या फॉर दैट मैटर हमें एक्सवाइजेड एनी ट्रीटमेंट दैट यू कैन थिंक ऑफ। सी ट्रीटमेंट, आई एम श्योर आपका डॉक्टर जिसके पास भी आप जाएंगे तो बता देगा आपको। एंड आई एम श्योर एवरीवन इज वेल एजुकेटेड, all the oncologists are very well educated to guide you over the treatment. Treatment is very stage specific, site specific, वो different, that is altogether different part of the story. But why I am here to talk to you about this, अब we all used to go to movies। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। हम जब प्री कोविड की बात कर रहे हैं, when we used to go to see movies, पीवीआर पे जा रहे हैं, किसी भी हॉल पे जा रहे हैं, there used to be a small film of 2 to 3 minutes जिसमें हम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स दिखाए जाते थे, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कट लगा हुआ है, किसी के नाक से ट्यूब डली हुई है, और वो एक मैं गुटखा खाता था, उसको कैंसर हो गया ना, वो बहुत बेड पे आ गया है वो पेशेंट। सो एनी एवर थॉट, मतलब आई यूज्ड टू हियर पीपल सिटिंग अराउंड कि यार हम मूवी देखने आए, ये मूड खराब कर देते हैं हमारा, व्हाई डू दे हैव टू रन सच एड्स। या whosoever is smoking, right, they will comprehend this smoking जो पैकेट है सिगरेट का, उसके ऊपर एक बहुत ही गंदी सी पिक्चर बनी होती है, इसमें लिप में से कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ बनी होती है, गर्दन में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ बनी होती है। वो क्यों बनी होती है? So these are the small measures which the government takes to enlighten you against the factors, or enlightening you or telling you the factors which causes cancer. अब फैक्टर कॉजिंग कैंसर ना बहुत बड़ा टॉपिक है जी, किससे कैंसर हुआ जी। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल टू माय पेशेंट्स इज कि आई जस्ट से द एग्जैक्ट लाइन व्हिच आई यूज इन माय ओपीडी। मैं कहता हूँ, और पूछते हैं सर परहेज क्या है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। सो आई ऑलवेज टेल देम भाई देखो 6 परहेज हैं: तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का एंड अल्कोहल। सो क्या आर दीज द ओनली 6 पॉइंट्स or 6 agents which cause cancer? Answer is again no. But are these 6 the major points or the major changes in the lifestyle which can prevent you from cancer? Answer is yes. Before I proceed, एक line और, one of my patients he came, सर मैं तो कोई तंबाकू भी नहीं खाता, सिगरेट भी नहीं पीता, हुक्का भी नहीं खाता, but then why do I am suffering from cancer? So हर एक कैंसर वाले जो पेशेंट है, मतलब इट इज सीन दैट आउट ऑफ 100 हेड एंड नेक कैंसर्स patients that we see, more than 90 and 95% of the patients have been smoking, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और any ill habits होते हैं। बट अगेन एज आई से, सब
सिगरेट पीने वालों को कैंसर नहीं होता, लेकिन जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें से 95% पेशेंट्स में सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है. सो इट इज ट्रू द वाइस वर्सा. इट इज नॉट ट्रू कि ऐसा नहीं है कि हर एक सिगरेट वाले को कैंसर होगा, लेकिन जिसको कैंसर हुआ है, इफ यू गो बैक एंड ट्रेस द इल हैबिट्स, वो कहेगा हाँ जी कभी बीड़ी पी है, कभी कोई खैनी खा रहा है. मतलब टोबैको इन एनी फॉर्म इज कैंसरस, be it खैनी, be it गुटखा, be it बीड़ीज, cigarette, cigar, XYZ, whatever on the earth you take. And cigarette is not, cigarette is not only the nicotine that I want to talk about. It is more than 2600 chemicals that it has. I'm telling you a very big number. Yes, you can go back and check on it. I've obviously, yes, I've also, this is again from the data is from the internet. Nicotine, tar, and other abusive substances that it has. Plus the addiction that it gives you. एक बार सिगरेट में से किसी को कैंसर नहीं हो रहा, बट वो एक बार हर रोज होने लगता है, फिर वो हर घंटे होने लगता है. दिस कॉजेज कैंसर. प्लस पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर, ऑलरेडी pollution level is so high. It is so high. Then so मतलब there was a last year की शायद बात है, if I'm not wrong, there was low pressure area in Delhi, and people were having a lot of respiratory problems. Even the politician used to say Delhi has become a furnace. If you recall, I'm again talking about the pre-COVID somewhere, I'm talking about 2019, if I'm not wrong, August, September. Delhi was called a gas chamber. There was low pressure area, चारों तरफ से धुआं इकट्ठा हो गया था. The eyes used to burn when you used to go out. People were coughing a lot. I happened to travel to Dehradun in that particular time, and Dehradun was like a new life to me for whatever days I was there. कोई खांसी नहीं, कोई आंखों में जलन नहीं, ठीक है, practically pollution free. I'm not promoting any city over here, but मैं जो आपको difference बताना चाह रहा हूँ, me as a doctor, I could sense the difference. So when you're already living in such polluted environment, why do you have to get into ill habits? So treatment for cancer is documented. That is by the books. We don't need to bother about that. That the oncologist will take care, whether surgical, radiation, or the medical oncologist. That is their job. You just take care of your job. Your job is to prevent yourself. You know, हमें वो पढ़ाया जाता था when we used to study MBBS. You know, prevention is better than cure. And this statement goes, ये MBBS में सबको पता है कि वो कहते हैं ना दुर्घटना से सावधानी अच्छी, राइट. So why do you want to expose yourself? जब पता है आगे चल के खाई है, why do you want to even walk on that street? You know, will not, no one wants to walk. हम कहते हैं आगे डेड एंड है, अब नहीं जाते हम आगे. हम कहते हैं आगे डैम है, डूबने का डर, हम नहीं जाते हैं आगे. But these ill habits, these things, these gives you, these everyone is so much engrossed in these that सबको पता है ये बात कि जो सिगरेट का पैकेट खोलते हैं कि उसके ऊपर एक किसी ओल्ड मेल की फोटोग्राफ लगी हुई है जिसके लिप के ऊपर एक कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है जो इसको पीने से हो सकती है. बट नो वन स्टॉप्स. देखते हैं, आंख बंद करके खोलते हैं, सिगरेट निकालते हैं, पी के चलते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग दैट हेड एंड नेक कैंसर जो है खाली अप्रैल में डायग्नोज होगा, इट इज कॉल्ड बिग मंथ, आप रेडिएशन कराओ, कीमो कराओ. मैं कह रहा हूँ आप लोग इल हैबिट से बचिए. कैंसर इज अ वेरी लॉन्ग फाइट. इट इज नॉट an easy disease to treat. ये कोई आम बुखार या कोई लूज मोशन नहीं है कि आपने दवाई ली और आप ठीक हो जाए. So cancer is a very long and dreadful disease. It is still dreadful. We have come a long way in terms of development. We have come a long way in terms of treatment. 20 साल पहले और आज की फिगर्स में कंपेयर करेंगे कि भैया स्टेज 2 में हेड एंड नेक कैंसर में क्या सर्वाइवल था वर्सेस टॉक ऑफ 1980s. there is a remarkable difference. Agreed. But it is still not 100. It is still not 100. When the treatment outcome is not 100%, or is not even close to 100%, why do we even want to risk our lives? So April is head and neck cancer month. So here I'm talking about head and neck. But I am not talking, I'm cigarette smoking. It causes cancer from head to toe. What to talk about? What to talk about head and neck cancer? Similarly, ill habits. So it is very important for yourself to stay protected. Also, I like to quote one sentence which my professor used to tell me when I was studying way back. They used to say the only way not to have cancer in today's time is not to be born. अगर कैंसर से किसी को बचना है तो उस मनुष्य को पैदा नहीं होना चाहिए. So it has become so common.
when it has become so common, it is very important for everyone to take precautions. पीछे कोविड जब फैला था, जब कोरोना बहुत ज्यादा इंडिया में सेकंड वेव स्पेशली, everyone was so cautious कि सैनिटाइजर करना है, मास्क पहनना है, social distancing. And moment it has gone down, these are very good habits that should come within, and that should be part and parcel of the life. ऐसा नहीं है कि कोविड में ही फॉलो करना है. आई एग्री, कोविड में वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, बट स्टिल यस, इट इज गुड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, इज गुड टू वेयर मास्क इन द पब्लिक स्टिल. सो इट इज नॉट दैट कि कैंसर होगा तभी हम सिगरेट छोड़ेंगे, कैंसर होगा तभी हम अल्कोहल पीनी छोड़ेंगे. इट इज, यू हैव टू प्रिवेंट एंड टेक स्टेप टुडे. एंड trust me, if I'm able to get one of you who is listening to this talk of mine to quit smoking or quit ill habits today, my job is done. I mean, I'm only here to get one person, and in the comments I like to see, sir, I have stopped smoking, so I have stopped drinking. अगर एक जन ने बोल दिया, I guess then the whole purpose of this whole lecture or this whole live streaming or this or whatever that we are doing right now is solved. But this has to continue. This has to be a chain. This has to be, the peer pressure is to take you out of the ill habits, not to push you in ill habits. सब peer pressure की वजह से यार दोस्त पी रहे थे, कॉलेज में पीनी शुरू कर दी. नहीं नहीं नहीं. सो यार दोस्त, वो यार दोस्तों को भी समझा रहा हूँ, भाई तुमने भी नहीं पीनी है, अपने दोस्तों को भी नहीं पीने. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट शुड बी द peer pressure. या वो नहीं पीता, उसके सामने पीऊंगा ना, so it will feel very bad, so let me not smoke, let me not drink in front of him. This should be the peer pressure. Not that कि वो पी रहा था इसके साथ पीनी पड़ेगी यार, just to be part of the gang. No no no. Rather you stand out alone, tell that you are smoking, I'm not going to come. So I'm sure I took this talk to another scenario, and I did another tangent to it of smoking and ill habits. But that is the main crux of the whole story. These ill habits are one of the factors which causes cancer. So they are modifiable factors, they are non-modifiable factors. So modifiable factors जो आप खुद modify कर सकते हैं, out of which 6 remain is तंबाकू, पान, बीड़ी, cigarette, हुक्का, शराब. These are 6 modifiable factors which can be easily modified right from the day one. There are other non-modifiable, hereditary है, XYZ, other factors हैं. But those are non-modifiable. That is not in your hand. But जो आपके हाथ में है वो तो करिए. That is very important. And just a last few minutes I like to talk about. I want to talk about the cancer treatment. So cancer treatment involves any cancer treatment involves there are three parts to it. You have surgery, you have chemotherapy, and you have radiotherapy. कैंसर ट्रीटमेंट से डरना क्यों है? किसी को बुखार होता है तो एंटीबायोटिक खाता है, किसी को इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक खाता है, किसी को कैंसर है तो एंटी कैंसर दवाई खानी पड़ेगी. एंटी कैंसर का दूसरा नाम है कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी है डिफरेंट आई मीन डिफरेंट रूप, मतलब उसके काफी अलग अलग वेरिएशन है. क्या वो कीमो हो, टारगेटेड हो, इम्यूनो हो, बायोलॉजिकल हो, XYZ whatever. But that is not important. The important is that you understand that the treatment which is required, it is a need of the hour, because someone is suffering from cancer, so that person has to undergo anti-cancer treatment, which involves surgery, chemotherapy, and radiotherapy. सर इससे बाल उड़ जाएंगे, इससे चमड़ी काली पड़ जाएगी. अरे भाई, आदमी बचेगा, इंसान बचेगा तो ना चमड़ी देखोगे, तब नहीं बाल बनाओगे. So it is very important to save life first. And in the end, I always say this: cancer is not a death sentence. Cancer कोई मौत का फरमान नहीं है. It is treatable. The disease is deadly again, but the path towards this treatment is little longer. But ऐसा नहीं है कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता. कैंसर का भी ट्रीटमेंट है. Obviously, every treatment comes with pros and cons. किसी को कुछ फायदे, किसी को कुछ नुकसान. वो तो आप, again, I give this example in my OPD. आप वो जब समोसा खाते हो हल्दीराम से, उसका भी साइड इफेक्ट है. आप समोसा खाते हो किसी भी XYZ स्वीट शॉप से, I'm not naming any sweet shop here, तो या किसी भी उससे, तो उसके साइड इफेक्ट है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है जी, लूज मोशन हो सकते हैं जी, आपके पेट खराब हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, मुंह जल सकता है. सो वी नेवर थिंक अबाउट दैट. हम खा लेते हैं. So there is an effect and a side effect of each and everything, each and every item that you eat, each and every action that you do. But cancer word बहुत बड़ा है. The moment you hear that someone is suffering from cancer, चारों तरफ के लोग डॉक्टर बन जाते हैं, और जो बेचारा डॉक्टर है वो सुनता रहता है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा.
and he on the earth know how to treat you. But उसके अलावा सब आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये पत्ता खा लो, उसके पास चले जाओ, यहाँ नीम हकीम को, मतलब there are so many facts, there are so many myths associated to it. So I'm not discussing all those myths. But before I end this, lastly, I would say cancer is a treatable disease. Cancer it's a long journey. The fight against cancer is a long journey. It is you who has to come out of your houses to fight against cancer. We all need to join hands. We need to join hands in fight against cancer. It is not a single day journey. लंबी journey है. So make last food for thought. मतलब दिमाग को I'll just leave a question open ended to you. किसी पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है 45 years of age. I want a list of patients in the comment who says that their diabetes have been cured and they are not taking any anti-diabetic medicine, चाहे वो इंसुलिन हो चाहे वो गोली. I just want to hear out whosoever has achieved a non-diabetic state. Okay, and then let's see. And I'll also like to hear comments from the cancer survivors कि कितने cancer survivor हैं, उनका कितना time में treatment पूरा हो. So you yourself can read and judge insulin या oral hypoglycemic agents या टीबी की ये जो डायबिटीज की दवाई है, ये पेशेंट के साथ ही खत्म होती है. कैंसर का ट्रीटमेंट तो फिर भी 6 महीने में, साल में खत्म हो जाएगा. बट डायबिटीज and other long cardiovascular, neurological disease, बहुत लंबे treatment है. And I am yet to see a patient who says that I am diabetes free now. I have never seen in my clinical practice till date. And any one of you who has, please just put your name and comment. I'll definitely like to come and talk to you. Maybe personally, that is also okay. So in the end, again, I wish you all a very happy life, a healthy life. Stay away from all the ill habits. Okay? And prevention is better than cure. Remember this line. Just it should be engraved in your mind that prevention is better than cure. So you have to take all those measures which are preventing you from getting cancer. Okay. So again, in the end, myself, Dr. Sunny Jain. I am head of the oncology at QRT Hospital, Faridabad, and a senior consultant oncology in Apollo Hospital, Saritagaya. I wish you all a very happy and a healthy life. If you have any comments, any queries, please post it down. I would be very happy to connect with you again. Thank you.